Hello kids, today I will teach you chapter 1 economics class 9th. This is a chapter name the story of village Palampur. Now first I will tell you the introduction of Palampur. What is Palampur? Palampur overview. The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to the production. These we do through a story of a hypothetical village called Palampur. The main thing is this ki what is Palampur? Palampur included story of the hypothetical village. Farming. What is the main activity? What is the main activity of Palampur? Farming is the main activity of the Palampur. That means कि Palampur में farming जो होती है यानी कि कृषि कृषि उनकी मेन एक्टिविटी है. इसके अलावा उनकी नेक्स्ट स्केल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. बट द मेन एक्टिविटी इज फार्मिंग. हाउ वी दे नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज. इट इज़ कंपल्सरी कि कोई भी हम उनकी एक्टिविटी होती है उनके लिए रिसोर्सेज की नीड पड़ती है. एंड द रिसोर्सेज इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड द मेन मैड items, human efforts, money, etc. As we read through the story of Palampur. Now the introduction. Introduction is Palampur. Palampur is the well connected with neighboring village and the town. Palampur का जो मेन नेबरिंग विलेज और टाउन है वो रायगंज है. रायगंज बहुत बड़ा विलेज है, अ बिग विलेज. इट इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. नाउ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल. वहाँ जाने के लिए पालमपुर तक पहुँचने के लिए वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल हैं. इंक्लूडेड बुलेट कार्ट्स, टांगास, बोगीज. बोगीज आर वुडन कार्ट ड्राउन बाय बफेलोज लोडेड विद जैगरी एंड अदर commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. The village has now how many families are there? There are about 450 families belonging to several different caste जो different caste से belong करती हैं. 80s के लगभग अपर कास्ट फैमिलीज हैं. ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज. जिनकी खुद की लैंड है गाँव में. दियर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट एंड प्लास्टरिंग. एंड द मोस्ट ऑफ द हाउसेज, वहाँ पे जो जितने भी हाउसेज हैं, दे ऑल आर विथ इलेक्ट्रिक कनेक्शंस. Electricity powers are the tube wells in the fields and it's used various types of small business. Palampur has 2 primary schools and a 1 high school. Okay, and there is a primary health center also which is run by government. 1 private dispensary where the sick are treated. That means Palampur अपने आप में पूरी तरीके से डेवलप्ड है. इट इज़ अ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स ऑल्सो. नाउ द स्टोरी ऑफ द पालमपुर एंड इमेजिनरी production activities refer to as non-manufacturing, transport, shopkeeping, etc. Now we turn about the page. Here the organizations of production. Organization of production. Okay. अब now tell me how many resources they need. Organization. The first requirement. उनकी अपनी जो उनकी first requirement है, they need a land. The next is labor and the third one is physical capital. Okay. The human capital organization of production is the first requirement is land, the second is labor and the third is physical capital. Tools, machine, buildings, raw material and money in hand. And now what is the definition of working capital? How can we define working capital? Raw material and the money in hand when
raw material and the money in hand are called working capital. There is fourth requirement too. The third requirement, what they need? Human capital. In human capital, land, labor and physical capital. And the fourth requirement is knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in a market. These days is called human capital. We shall learn more about human capital in this chapter. See, a factory with several laborers and machine. Every production is organized. जितना भी प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनाइज किससे होता है? कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल विच आर नो एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जितने भी प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स की नीड होती है उसमें हमारे पास लैंड, इट्स कंपल्सरी, लेबर टू, physical capital and the human capital, they all are combined with a factor of production. Now farming in Palampur. अब फार्मिंग जो है वहाँ पे जो होती है मेन उनका, मैंने आपको बताया था कि मेन उनका फार्मिंग इज़ अ मेन बिजनेस. फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन activity in Palampur. 75% of the pupils who are working are dependent on the farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these pupil is closely related to production on the farm. Now is the second is there a way one can grow more from the same land ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अब इसमें इस टॉपिक के अंदर इनका जो मेन है कि किस चीज़ की फार्मिंग मेन रहती है. इन रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज अ कैटल फीड. इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. द सेकेंड इज a part of a land area is also devoted to the sugar cane, which is harvested once every year. That means sugarcane in its raw form as jaggery to sold the traders in Shahpur. Electricity came early into Palampur. This is the main topic. Electricity सबसे पहले पालमपुर में प्रोवाइड थी. To grow more than one crop on piece of land during the year is known as the multiple cropping. How can we define the multiple cropping? Multiple cropping means the grow more than one crop, एक crop से ज़्यादा on a piece of land during the year is known as the multiple cropping. Multiple cropping की एक टाइम में एक वक्त से ज़्यादा जब क्रॉपिंग की जाती है, खेती की जाती है, this is called a multiple cropping. All the farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potatoes as the third crop is in the past 15 years to 20 years. Now we complete the chapter here. Not to complete, but this topic is complete here. Tomorrow we take another topic about this book. Okay, thank you.